Today is 26th January 2026, and we have to complete this worksheet as Walaikum Assalam and current electricity try to complete within January. So the question on your screen, it is January 2023 paper, and it is page number 3, because page number 1 and page number 2 we have already solved. In this question, beta, I am asking you to solve. Sir, 500 and 600 ohm resistors are connected in parallel. And if they are connected in parallel, then their total resistance can be calculated by this formula. Product divided by sum. बटा मनाहिल आप हमें आंसर कीजिएगा. What will be combined resistance of this parallel part? 272. ठीक है बेटा. सो दिस इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस. जल्दी से बेटा कॉपी कीजिए इसको अपने पास. लिख कर करोगे तो समझ में आएगा. इफ यू डू नॉट राइट देन आई थिंक इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सर, फर्स्ट two resistors are connected in parallel, and I have calculated their combined resistance, and combined resistance is calculated by this formula, and this is a thermistor. This is a thermistor, and parallel part 500 and 600, and their total is 272. अस्सलाम वालेकुम बेटा जैनब. पेज नंबर 3 पर है बेटा हम लोग. पेज नंबर 3. अगर आपने इसको प्रिंट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, अगर आपने प्रिंट किया हुआ है तो राइट नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 3. तो combine of 500 and 600, it is 272. Thermistor remain as it is. And what is the question? The question is calculate voltage of voltmeter. It means we have to calculate voltage of this parallel part. It means we have to calculate this voltage. So 500 and 600, their total is 272. And we are given one more thing. Total current of the circuit is 23 milliampere. So total 23 milliampere will pass through this combined resistance. Total current 23 milliampere. So if I calculate voltage, sir, V equal to IR, sir, total current of the circuit is 23 milliampere, and this total current is passing through this combined parallel part, and combined resistance is 272. 272. So, but Manahil, now what is the total voltage? Total current 23. हाँ बेटा 6.27. So total voltage of the battery is 6 volt, and out of 6 volt, out of, sorry, 12 volt, out of 12 volt, 6.3 in this parallel segment, and remaining voltage in the neighboring thermistor. If you subtract 12 minus 6.3, then I think it becomes 5.7. Then this 5.7 volt across thermistor. So, but Zainab, assalamu alaikum. Are you in class, Zainab? Okay, brother. Zainab, in this question, this is our first question of today's class. So, two resistor 500 and 600 are connected in parallel. So, I used formula of parallel and I calculated total resistance. Total resistance is 272. This thermistor remain as it is. When I calculated total resistance of parallel part, then we are given total current 23 milliampere. So the same 23 milliampere current passing through this parallel part. So its voltage is 6.3. And now the question is calculate power
thermistor. Sir, power is equals to V into I. Sir, voltage I have calculated by this concept. Sir, total voltage is 12. If this voltage is 6.3, then this voltage will be remaining voltage, that is 5.7. So voltage is 5.7, and the current, sir, current through the circuit is 23 milliampere. 23 milliampere. So same current will pass through thermistor. And if you multiply these two numbers, Manahil, what is the answer? 0.13. And the unit of power is watts. Okay, but so this question is very simple. I did not teach you any theory about it because this question is just like IGCSE standard, in which two resistors are connected in parallel. First, we calculated their combined resistance, whereby using total current and combined resistance, you calculated voltage of this parallel part. Total voltage is 12, 6.3 here, so remaining 5.7 will be here, and 5.7, and given current, we have calculated power. So I think this is a very easy question, so I did not teach its theory. And now I am moving. No, sir, the question is remaining. The question is the student decreases the temperature of thermistor. Decreases the temperature of thermistor. Okay. So you know here is thermistor, here is thermistor, and here it was a parallel resistor. Across parallel resistor, there is an voltmeter, here is an ammeter, etc. Acha ji, the question is, this is ammeter and this is voltmeter. And this is parallel part. I did not draw the two resistor. Acha ji, the question is, if the temperature decrease, if temperature decrease, then the resistance of thermistor will increase. And if resistance increase, then according to Ohm's law, if thermistor resistance increase, then its voltage will increase. Total voltage is 12 volt. Total voltage is 12 volt. Here it was 6.3, it was 5.7. Sir, if temperature decrease, resistance increase, so its voltage will increase. Consider this voltage increase to 6. And if its voltage increase, then its voltage will decrease. And this 6.3 decreases to 6.0. So the result is a voltmeter reading will show less voltage. Voltmeter reading will show less voltage, as well as, sir, the resistance of thermistor increase, so total resistance increase. Sir, if total resistance increase, then total current decrease. And if total current decrease, then m meter reading will also decrease. सो आई थिंक यू शुड राइट. अगर आप लिखोगे नहीं अब्दुल्ला, अगर आप लिखोगे नहीं, आपके दिमाग में ये बातें नहीं रुकेंगी. ठीक. एंड इन एग्जाम यू कैन नॉट राइट दीज एरोज. ठीक है जनाब, यू शुड राइट इन प्रॉपर वर्डिंग. सो नोट डाउन एज टेम्परेचर डिक्रीज resistance of thermistor increase as V directly proportional to R. So its voltage of thermistor increase. और वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा इफ थर्मिस्टर वोल्टेज इंक्रीज, thus voltmeter reading which is connected across parallel part, voltmeter reading will decrease.
Voltmeter reading will decrease. When temperature decrease, resistance of thermistor increase. Resistance increase, so its voltage increase. And if resistance of thermistor increase, then the voltmeter is connected across parallel part, it will decrease. It is about voltmeter, and now I am talking about ammeter reading. As total resistance of circuit increase, and you know current inversely proportional to R. Sir, if total resistance increase, then total current decrease, and total current decrease means ammeter reading will decrease. Ammeter reading will decrease. So you should write so that आपके दिमाग में concepts बैठे कि if two resistors are connected in series, if the voltage of thermistor increase, then the voltage of this parallel part, yeah, or a voltmeter, it will decrease. अच्छा जी, Zainab, I am interested to check one concept with you in the next question. और ये क्वेश्चन बड़ा मैंने खुद ही बनाया पर इसी टाइप का बनाया है, स्टोरी यही है. But the situation is changed. Sir, it is series and now I have connected in parallel. ठीक है जी, I have connected in parallel. But Zainab मेरी हेल्प कीजिएगा. Zainab, I am asking you. Sir, if temperature decrease, I am asking you. If temperature decrease, ठीक है बेटा? If temperature decrease, then resistance of thermistor increase. Resistance of thermistor increase. If resistance of thermistor increase, then my question is, what will be change in current of ammeter number 1, ammeter number 2? बल्कि मेरा दिल कर रहा है कि एक एमीटर यहाँ पे और लगा दूं, which is total A. जी बेटा, आप हमें बताइए क्या चेंज आ जाएगा एमीटर नंबर 2 में, एमीटर नंबर 1 में और टोटल ए में. जी जैनब. रुक जा. टोटल पे ना जाए, पहले मुझे इससे शुरू करें कि A2 में क्या फर्क आ जाएगा. टेम्परेचर डिक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, देन व्हाट अबाउट करंट चेंज. करंट विल, सही. सर करंट डिक्रीज हो जाएगा, रुक जाए. एम्पियर नंबर 2 में करंट की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी. ठीक. इसमें करंट कम हो गया, हमने आपकी बात मान ली. अब बताना, इसका करंट कम हो गया तो इसके करंट पे क्या फर्क पड़ेगा. बस यहीं पर रुक जाइएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, ये वाली बात ध्यान में रखिएगा. जब भी मैंने ये सवाल निकाला, वरना मुझे सवाल बनाने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, तो जरा इस वाली बात को समझिएगा. इफ टू resistors आर कनेक्टेड इन सीरीज and the voltage of any one increased, then this voltage affect the voltage of the other. ठीक है, अभी आपने पढ़ा इसका वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा. बच्चे ने यहीं से दिमाग बना लिया कि एक कम होता है दूसरा ज्यादा हो जाता है. जैनब, मैं बता रहा हूँ सारे बच्चे यही करते हैं, आपने भी अभी यही किया है. ठीक है, वेन इसका करंट कम हो गया तो सर उसका करंट बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता. द करंट ऑफ एमीटर नंबर 1 विल नॉट चेंज. मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. विल नॉट चेंज. सर वाई. भाई करंट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. ठीक है जनाब. यू नो दिस रेजिस्टर is connected with battery and it is connected in parallel. इसका वोल्टेज पहले भी 12 था, अभी भी 12 है. वोल्टेज इज सेम, इट्स रेजिस्टेंस इज सेम, सो इट्स करंट विल नॉट चेंज. करंट चेंज नहीं होगा. इन पैरेलल सर्किट अगर एक रेजिस्टर का करंट वेरी करता है तो दूसरे का करंट वेरी नहीं करेगा. और ये अभी अगले सवाल में मैं यूज करूंगा जैनब बेटा, इसीलिए मैंने उसकी तैयारी कराने के लिए ये सवाल बनाया है. ठीक है जी.
तो इसका करंट कम होगा, सर उसके करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसका करंट था 2 एम्पियर, इसका करंट पहले था 3 एम्पियर, टोटल करंट था 5 एम्पियर। ठीक। अभी आपने कहा सर इसका करंट कम हो गया, फॉर एग्जांपल इसका करंट 2 एम्पियर हो गया, और मैंने कहा कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइएगा जैनब, इस टोटल करंट में फर्क पड़ेगा? जी, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो टोटल करंट विल डिक्रीज, total current will decrease. So by this question, I am teaching you, if resistors are connected in parallel, if current of any one resistor changed by any means, then the current of other resistor remains same. Why? Because the other resistor is connected in parallel with the source, directly connected with the source. Its voltage remain same, its own resistance same. So when these two quantities are not changing, then obviously current will also not change. ठीक है जी। जबकि इन सीरीज अगर इसका वोल्टेज ज्यादा हो रहा है तो इसका वोल्टेज कम हो रहा है, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज इन दोनों के वोल्टेज के सम के बराबर है। तो आई होप कि आप इस बात को याद रखेंगे, और मैं सेम क्वेश्चन अगले किसी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज करवाऊंगा आपको। ठीक है जी। तो पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 क्वेश्चन कंप्लीटेड, एंड नाउ आई एम मूविंग पेज नंबर 10। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा इंशाल्लाह इसी जनवरी में खत्म करना है, मतलब इस शीट के सारे सवालों को कोशिश करके खत्म करना है। एंड नाउ मूव कीजिएगा बेटा पेज नंबर ये 10 पर, पेज नंबर 10 पर आ जाए बेटा। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 में क्या हो रहा है तो जरा सुनिए। सर पेज नंबर 10 में हो ही रहा है, क्वेश्चन जरा देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टर वाई इज एडेड। ठीक है जनाब। इन द फर्स्ट पार्ट, दिस 3 ohm resistor is alone, no series resistor. But now, along with this 3 ohm resistor, resistor Y is added in series. ठीक है। Resistor Y is added, so the resistance of parallel section increase. बिल्कुल सही बात है। When it is connected in series, then the total resistance of parallel part will increase. Yes, it is right. So I am writing because we have to evaluate the student statement. और मैंने नीचे मार्किंग स्कीम लगाई हुई है, तो आई थिंक मुझे लिख के टाइम नहीं पास करना चाहिए। जरा सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। मैंने इसको यूं लिखा हुआ है, यस स्टूडेंट इज करेक्ट, द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल पार्ट इज ग्रेटर, द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल पार्ट इज ग्रेटर। ठीक है जी। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं। व्हेन resistor Y is added, then series resistance increase and total parallel resistance increase. So student statement, total resistance of parallel section increased, it is right. And total resistance of the whole circuit increased, yes, it is also right. When parallel part increase, then total resistance increase. Okay, it is okay. And when total resistance increase, यहाँ तक की बात सही है, then P is equals to I square R. P is equal to I square R. ठीक है। अच्छा बेटा, मैं किसी स्टूडेंट को शामिल करूंगा। बनीन बेटा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बनीन। व्हेन टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है जनाब, वाई एडेड, पैरेलल पार्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज, यस सर, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, यस। एंड इफ टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, देन द स्टेटमेंट इज टोटल पावर ऑल्सो इंक्रीज। क्या आपको ये स्टूडेंट की बात सही लग रही है बनीन? बनीन क्लास में है भी? हाँ बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, ठीक है। आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए। इफ दिस रेजिस्टर वाई एडेड, इट इंक्रीज्ड resistance of parallel part, yes, it is right. And it increases total resistance, yes, it is right. तो सेंटेंस
First two sentences are right. I am not asking you question. First two sentences are right. And now the question starts. When total resistance increase, it will increase total power dissipation. Total resistance increase, then total power will increase or decrease. मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। इसका मतलब स्टूडेंट की ये वाली बात सही है, मान ले। हाँ, लेकिन देखिए ऐसा है नहीं ना, ऐसा नहीं है। जैनब क्या आप स्टूडेंट? हाँ जी। व्हेन टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, हाँ बेटा बनीन सोचो। व्हेन टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, जी जी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, रुकिए तो। व्हेन टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, इट विल डिक्रीज करंट, इट विल डिक्रीज करंट, ठीक है। बट आपको कहना ही चाहिए सर एक चीज इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है, सर मुझे तो लग रहा है इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहां तक की मैं बात आपकी मान लेता, लेकिन ये भी सही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि सर देयर इज स्क्वायर ऑन करंट, देयर इज स्क्वायर ऑन करंट, एंड यू नो, if a number is squared, if a number is squared, then obviously उसकी डोमिनेंस बढ़ जाती है। सर करंट का स्क्वायर है, तो करंट का स्क्वायर एक बड़ा नंबर देगा जो कि डिक्रीज हो गया, और बड़ा नंबर अगर डिक्रीज हो गया ना, तो टोटल पावर भी डिक्रीज हो जाती है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, और मैं अपनी इस बात को एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन यू द सेम क्वेश्चन बाय अनदर मेथड एज वेल, but right now I am repeating, when the total resistance of the circuit increased, then it it is the student statement कि total power will increase, power increase। बनी ने भी कह दिया yes sir total power will increase, but in the marking scheme the answer is no, no, total power will not increase, it will decrease. Why? Because when resistance increase, it will reduce current, it will reduce current, and current is squared, so it will affect the total result, and the total result is sir power will decrease। बनीन बेटा बोल के बताएं जो बात मैंने बोल दी है। हाँ हाँ, it will affect the whole result and the total power decrease, ये इसका आंसर है। जैनब बेटा आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है जी। अच्छा एक बात, दूसरी बात आप नोट कीजिए, उसने कहा है टोटल पावर ऑफ द होल सर्किट, टोटल पावर ऑफ द होल सर्किट, ठीक है। जब होल सर्किट की बात करते हैं तो नोट कीजिएगा होल वोल्टेज रिमेन सेम। सर वोल्टेज तो बैटरी का होता है, बैटरी का वोल्टेज थोड़ी कम ज्यादा हो जाता है। तो इफ यू यूज दिस फॉर्मूला V इंटू आई, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। कैसे? सर V रिमेन सेम, V रिमेन सेम, एंड एज टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, so total current decrease, and if total current decrease, it will decrease power, it will decrease power, so total power will decrease, and student statement is not correct। तो दो तरह से मैंने बताया है, एक तो मैंने आपको स्क्वायर वाला मेथड बताया कि करंट पे स्क्वायर है इसलिए ये ज्यादा डोमिनेट करेगा, इसलिए टोटल पावर डिक्रीज हो जाएगी। और उससे ज्यादा आसान ये वाला है जो मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि जब एग्जामिनर ने ये वाला फॉर्मूला दिया है तो हमें आंसर भी इसी फॉर्मूले से ही देना चाहिए ना बेटा, क्योंकि उसने फॉर्मूला ये दिया हुआ है। और मार्किंग स्कीम में देखिएगा उसने आंसर ना V इंटू आई से दिया हुआ है। कह रहे हैं जनाब करंट कम हो गया है, वोल्टेज रिमेन सेम। सर वोल्टेज सेम है, सर जब वोल्टेज सेम है तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला ले लें P इज इक्वल टू वी आई, तो सर अगर करंट कम हो गया है तो होल पावर की पावर भी, होल सर्किट की पावर ऑफ द होल सर्किट भी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट की बात इनकरेक्ट है, इसलिए स्टूडेंट की बात इनकरेक्ट है। ठीक, मैंने दो दफा तीन दफा समझा दिया सिमरा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिमरा आई एम रिपीटिंग लास्ट टाइम एंड सिमरा विल एक्सप्लेन फाइनली। सिमरा बेटा आर यू रेडी? सिमरा, सिमरा, okay, I am repeating. So the question is,
Sir, when resistor Y is added, then resistance increased. When resistance increased, then the student statement is power will increase. But sir, student is incorrect. When resistance increase, it will decrease current. It will decrease current, so power will decrease. As current decrease, voltage remain same, so power decrease. तो सिमरा आप किसी भी तरह से मुझे समझा दें। जी सिमरा। हाँ। हाँ। हम्म। एंड स्टूडेंट स्टेटमेंट पावर विल डिक्रीज क्योंकि वोल्टेज इज सेम पावर विल डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों को तंग करता है, मुश्किल सवाल है। अच्छा जी, इट वाज पेज नंबर 10 एंड नाउ पेज नंबर 11। जी, नाउ दिस इज पेज नंबर 11 क्वेश्चन। पेज नंबर 11 क्वेश्चन, June 2022. Sir, in this question again, we have a thermistor. We have a thermistor, and the resistance of thermistor depends upon temperature. Question is, if the temperature is 54 degrees Celsius, 54. So, can someone tell me if the temperature is 54, this is 54, this is 54, then what is the resistance of thermistor? क्या ले लूं resistance of thermistor? कहीं गलती ना हो जाए जरा सी भी देखिएगा। When temperature is 54, then the point is here. तो इस पॉइंट को 1 ले लूं या 0.95 ले लूं? तो आई एम यूजिंग दिस पॉइंट एज 0.95, 0.95, and this is kilo ohm, this is kilo ohm, so I am multiply with 1000, so it becomes 950 ohm. Okay, so the temperature of thermistor is 54, and when temperature is 54, then the resistance is 0.95, then its resistance is 950, or you can use 1000, तब भी चलेगा। इतनी एग्जाम में कोई जूम करके थोड़ी दिखाएगा आपको, ठीक है? तो इफ यू आर यूजिंग 1000 तो ये तो भी चलेगा। तो मनाहिल, क्या क्या आप मुझे सजेशन देती हैं, 1000 ले लूं या 950 लेके चलूं? मनाहिल, what number should I use, 1000 or 950? 1000। चले जी, हमें मनाहिल ने कहा है 1000 लेके चले, so I am using 1000. And now what is the question? The question is calculate total current of the circuit. Calculate total current of the circuit because ammeter or milliammeter is connected here. So actually we have to calculate total current of the circuit. And now I am using this number. Acha, this is 3000, this is 2000, and Manail said, sir, you should use 1000. Okay, now we are calculating total resistance of the circuit. Acha beta, this 3000 and 1000 are connected in series, so it becomes 3 plus 1, 4. 3 plus 1, 4. So 3 plus 1, it makes 4, and then then this is 2, and this is 3 plus 1, that is 4. And now calculate their total resistance. So total resistance will be 2 multiply 4 divided by 2 plus 4.
देन व्हाट इज द आंसर बेटा? 8/6, आई थिंक 1.5। अच्छा, 1.333। सो जी 1.333 किलो ओम, 1.33 किलो ओम। ओके, so I think the question is very very simple. 3 ohm plus 1 ohm, it makes 4. 4 and 2 are in parallel, so total is 1.33. Now we have calculated total resistance. But Abdullah, would you like to participate? I am asking you, total resistance is 1.33, total voltage is 12, and I have to calculate total current. Then what formula should I use to calculate total current, beta? Ya Allah, Ya Allah. We will use V equal to IR. V is equal to IR. Sir, total voltage is 12. Total voltage is 12. Total current we are calculating. And total resistance is 1.33 kilo ohm. अब्दुल्ला, तुम क्लास के आखिर में रुकना मेरे साथ। तुम्हें तो मुझे लग रहा है कुछ अलग से इंडिविजुअल क्लासेस कराना पड़ेगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वी आर गोइंग टू फिनिश। और आपको बेटा ये भी याद नहीं आ रहा कि सिंपल टोटल वोल्ट टोटल रेजिस्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड बेटा, टोटल वोल्टेज इज गिवन एंड वी आर कैलकुलेटिंग टोटल करंट सिंपली है। आप क्लास के आखिर में रुकिएगा बेटा, मैं आपको अलग से टाइम दूंगा। आपको तो इतना आसान सवाल करना नहीं आ रहा बेटा। अच्छा जी, कोई बच्चा मुझे बताया बेटा, व्हाट इज द टोटल करंट? -3 एम्पियर। एंड यू नो एक्सपोनेंट -3 मीन्स मिली। Exponent -3 means milli. So it is 9 milliampere. It is 9 milliampere. क्वेश्चन खत्म हो गया जी। सर ये क्वेश्चन आईजीसीएसई के स्टैंडर्ड का है, कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। टोटल रेजिस्टेंस निकाली, टोटल करंट निकाल लिया बेटा। अच्छा जी, टोटल करंट आ गया 9 मिली एम्पियर। 9 मिली एम्पियर। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, अब आपको फिर अगेन मैं जैनब को ही तंग करूंगा। जैनब, आप तैयार हैं परेशान होने के लिए? जैनब बेटा, ये वाला सवाल आपसे करवाएं। ठीक है जी। क्योंकि जैनब ने देखिए स्कूल में टॉपिक पढ़ा हुआ है, इसलिए हम जैनब को ज्यादा तंग इसलिए करते हैं कि जब आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है तो फिर हम आपसे क्वेश्चन करने का हक रखते हैं। अरे जरा देखिएगा जी जैनब बेटा, क्वेश्चन ये है कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है बेटा, टेम्परेचर कम हो गया। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विल इंक्रीज, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विल इंक्रीज, तो बड़ा आसान सा सवाल है, वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या फर्क आएगा? बस इतनी सी बात है, मैं तो समझ रहा था कोई मुश्किल सवाल आएगा। ये तो बहुत ही सीधा सा सवाल आ गया। टेम्परेचर डिक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज तो वोल्ट मीटर रीडिंग विल इंक्रीज। ठीक है भाई, भाई ये तो बहुत ही इजी सवाल था। मैंने लिखा जी, अच्छा मैं इसको प्रॉपर यहाँ नहीं लिख रहा भाई। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई थर्मिस्टर की, और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल है। अच्छा जी, आगे चलें। एक्सप्लेन हाउ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर अफेक्ट द पावर, पावर ऑफ 2 किलो ओम रेजिस्टर। जरा देखिए, मैं स्क्रीन शॉट करके फिर ऊपर जाके देखते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए, द क्वेश्चन इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा जी, हाँ ये वही वाला सवाल आ गया। जैनब जरा सुनना, हाँ बेटा जरा जैनब सुनिएगा। जब यहाँ रेजिस्टेंस कम हो गई, यहाँ रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस कम होने से इतने पार्ट का करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया। बताइए, इसका करंट बढ़ेगा तो इसका करंट कम हो जाएगा या वही रहेगा? वही रहेगा, ठीक है बेटा।
तो यही वो सवाल था जो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी, और मैंने आपको इस शीट की मार्किंग स्कीम भी भेज दी है। तो जून 2022 के नाम से आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई टीचर ने जो बात बोली है ठीक है, कि व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज resistance increase, when resistance increase then current of this part will decrease। लेकिन इसका करंट कम होना सर इसके करंट को चेंज नहीं करेगा। अब आप बताइए बेटा, करंट उसका वही है, रेजिस्टेंस इसकी वही है, वोल्टेज उसका वही है, नॉट चेंजिंग एनीथिंग, तो उसकी पावर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा मैं ये वाली बात लिखने जा रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको पहले ही दिया हुआ है, तो आई होप कि आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विल इंक्रीज, करंट ऑफ थर्मिस्टर विल डिक्रीज। ठीक है जी, एग्जाम में आप प्रॉपर वर्डिंग भी लिखोगे। थर्मिस्टर के लिए थर्मिस्टर के लिए करंट डिक्रीज हो जाएगा, बट बट करंट फॉर 2 किलो ओम रिमेन सेम। Thus power of 2 kilo ohm will not change। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आई होप कि आप इसको लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। So it was page number 12 and now I am moving towards page number 18। हाँ बेटा सिमरा, आपको बेटा मेरी ये बात समझ में आई इस वाले पार्ट में? ठीक है ना बेटा, ये वाली बात हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि इसमें अगर चेंज आ रहा है तो इसका चेंज इसको नहीं चेंज करेगा, उसके लिए सारी वैल्यू सेम रहेंगी, उसकी रेजिस्टेंस सेम है, उसका वोल्टेज सेम है, उसका करंट भी सेम रहेगा, इसलिए उसकी पावर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट इज सेम एज कि बेटा हमारे घरों में जो वायरिंग होती है ना बेटा, इट इज ऑल पैरेलल, इट इज ऑल पैरेलल। ठीक है, तो अगर आप किसी एक रूम को टोटली स्विच ऑफ कर दो, तो उसके बावजूद दूसरे रूम के अंदर करंट वोल्टेज किसी चीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन पैरेलल सर्किट अगर आप एक चीज को बंद करते हो तो दूसरी चीज का करंट या वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। ठीक है बेटा, जैनब अगर आपके रूम में फॉर एग्जांपल, हम तो अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी एग्जांपल दे रहे हैं, कि अगर मेरे रूम के अंदर 4 लाइट्स जल रही हैं और एक पंखा चल रहा है एंड ऑल दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अगर मैं सारे स्विच बंद कर दूं, सारे लैंप बंद कर दूं, तो पंखा तेज नहीं हो जाएगा, पंखा स्लो नहीं हो जाएगा, क्योंकि फैन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन स्विच, सो इट्स वोल्टेज इट्स करंट रिमेन सेम। तो मैं बाकी चीजें स्विच ऑन करूं या स्विच ऑफ करूं, पंखा उतनी ही स्पीड से चलता रहता है, उसकी पावर में कोई चेंज नहीं आता है। एंड नाउ आई एम मूविंग पेज नंबर 18। बट हमने परसों खत्म करना है हर सूरत में इस शीट को, बार बार मैं कह रहा हूँ, और नेक्स्ट वीक मुझे आपको टेस्ट भी करना है। नाउ दिस इज पेज नंबर 18, दिस इज पेज नंबर 18। अच्छा बेटा मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग